Good morning and welcome back to Kotak Securities Market Ready Session, जहां हम टेक्निकल to fundamental strategies, global to domestic updates as well as important sector और stock specific news को देखते हैं to help you kickstart your investment and trading day. So without any further ado, शुरुआत करते हैं global market updates के साथ. SGX Nifty 0.15% के लॉस के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिकेटिंग अ नेगेटिव स्टार्ट. However, domestic markets को देखें तो last evening the benchmark indices closed in green. BSE Sensex added 1.81% and Nifty 50 was up by 1.88%. Asian markets को देखें तो Nikkei was up 0.05%, Hang Seng down by 0.60% and Shanghai down by 0.15%. US markets को देखें तो Dow Jones added 2.15%, S&P 500 was up by 2.45% and Nasdaq Composite up by 2.51%. चलिए आज के टेक्निकल कॉल्स एंड अपडेट्स को देखते हैं. मार्केट का मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी वीक पोजीशन पे है. सपोर्ट फॉर द ट्रेडर्स अभी शिफ्ट हो गया है फ्रॉम 15,250 to 15,500 लेवल. As long as index is trading above the levels of 15,500, the chances of reaching 15,750 to 15,850 levels would turn bright. On the other hand, on the dismissal of 15,500 would take the market to the levels of 15,400 to 15,350. For the day, we should make short positions between the levels of 15,650 to 15,750 with a stop loss at 15,900. Moving on to today's fundamental call from our research desk, today we are recommending SBI with a buy rating, a target price of ₹700 and a holding period of 12 months. इस कॉल के पीछे के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं. We see operating profits having a good tailwind from operating leverages. SBI ने जो रिकवरी रिकॉर्ड करी है in its earnings and ROE, that is return on equity, is a classical recovery in credit cycles. Translations of operating profit to net profit is closer to the best of approximately 50%. SBI का net NPL ratio was at 1% and PCR, that is provision coverage ratio, was at 75% for FY22 and is the best in 2 decades. However, एक negative point जो हम यहाँ पे highlight करेंगे is that the worry of external shocks for the company may lead to weak price performance. फाइनली आज के टॉप सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज को देखते हैं. मई 2022 में फार्म और रूरल वर्कर्स का रिटेल इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ टू 6.67% एंड 7% रिस्पेक्टिवली. HPCL, that is Hindustan Petroleum Corporation, ने अनाउंस किया of issuance of debentures worth of ₹1,500 crore on private placement basis for funding of refinancing of existing borrowings and funding of capital expenditure of the issuer. KEC International ने कुछ नए ऑर्डर साइन करे हैं worth ₹1,092 crore across its various businesses of transmission and distribution, cable, railway and civil. आज 22 जून GHCL लिमिटेड की फाइनल डिविडेंड का एक्स डेट है ऑफ ₹10 पर इक्विटी शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड March 31st, 2022. तो ये थे आज के कुछ टॉप अपडेट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब. अगर आपको कोई और स्टॉक रिकमेंडेशंस या न्यूज अपडेट्स चाहिए ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया अकाउंट्स. ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे. हम कल सुबह फिर मिलेंगे विद न्यू टेक्निकल एंड फंडामेंटल कॉल एंड लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स बिफोर द मार्केट बिगिंस. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.